Yes, hello friends. Yes, today's our point is Williamson's synthesis of ether. Last point. We have already seen the both method during which ether is prepared. Williamson is the name of British scientist. In the memory of that person, this method is known as a Williamson synthesis. First of all, yes, ये कैसे ईथर बनता है इस मेथड में? The reaction between sodium alkoxide and alkyl halide. Yes, RONA and alkyl halide go X R dash. Yes, minus NaX will remove as a byproduct and our product will be ether. Yes, compulsory यहाँ हमें प्राइमरी अल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड या टर्सरी अल्किल हैलाइड लेंगे तो इट विल गिव्स द एलिमिनेशन रिएक्शन. दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू प्रिपेयर secondary ether या tertiary ether, तो secondary या tertiary product of alkoxide is to be taken. CH3ONA, sodium methoxide. On reaction with methyl chloride, Na part of sodium methoxide and Cl part of methyl chloride. Yes, NaCl will remove as a byproduct and finally CH3OCH3, it will be our dimethyl ether. But on reaction with ethyl chloride, it will gives ethyl methyl ether will removal of NaCl byproduct. It is also known as a methoxyethane. This is methoxymethane. Okay. Now, sodium secondary propoxide on reaction with methyl chloride, Na part of sodium alkoxide and Cl part of methyl chloride will remove as a byproduct NaCl minus NaCl. Our product will be 2-methoxypropane. It is the IUPAC name. Otherwise, methyl secondary propyl ether. Instead of methyl chloride, when we use ethyl chloride during this reaction, NaCl will remove as a byproduct. Then CH3CHO CH3 या CH2 CH3 लग जाएगा. तो ethyl secondary propyl ether. Otherwise, 2-ethoxypropane is the IUPAC name. On reaction with sodium tertiary butoxide, on reaction with methyl chloride, Na part of sodium, yes, and Cl, they will remove as a NaCl byproduct, and then finally our main product will be one side tertiary butyl methyl ether. Otherwise, you can say 2-methoxypropane is the IUPAC name of this compound. But when we use ethyl chloride instead of methyl chloride, at that time, tertiary butyl ethyl ether, its IUPAC name is 2-ethoxypropane. Then phenol on reaction with aqueous NaOH. Yes, this is the neutralization reaction. Phenol का H, NaOH का OH or water molecule will remove as a byproduct. This is known as a neutralization reaction. And finally it will give sodium phenate. Yes, sodium phenoxide. You can say sodium phenyl ether also. Now, on reaction with methyl chloride,
Na part of sodium penoxide and Cl part of methyl chloride will combine to each other and remove NaCl as a byproduct. This methyl group will attach with oxygen, gives methyl phenyl ether. Its IUPAC name is methoxybenzene. Its commercial name is anisole. If we use ethyl chloride instead of methyl chloride, then NaCl will remove as a byproduct. Benzene having OCH2CH3, otherwise you can say OC2H5. Ethyl phenyl ether. IUPAC name is ethoxybenzene and its commercial name is फेनिटॉल. ओके, तो ये हो गई अपनी विलियमसन सिंथेसिस. उसमें कुछ नहीं करने का. RONA सोडियम अल्कोक्साइड में से सोडियम इज टू बी रिप्लेस बाय अल्किल ग्रुप ऑफ हेलो अल्केन. R विल बी इक्वल टू मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, और दूसरा कुछ नहीं होगा. तो ये सोडियम की जगह हमें R डैश लिखना है. यहाँ मिथाइल लिखो, यहाँ ये इथाइल लिखो, यहाँ मिथाइल, इनके साथ मिथाइल लिखो, इनके साथ रिएक्शन होगी तो इथाइल लिखो. यहाँ सोडियम की जगह मिथाइल लिखो, इनके साथ ये इथाइल लिखो. यहाँ सोडियम के साथ ये हो तो मिथाइल लिखो, यहाँ इनके साथ रिएक्शन करो तो इथाइल लिखो. सोडियम, फ्रॉम सोडियम अल्कोक्साइड वी विल replace sodium by alkyl group of alkyl halide. One more thing, if you want to prepare secondary or tertiary ether, then compulsory we should have to use sodium alkoxide in the form of secondary or tertiary form में. लेकिन alkyl halide प्राइमरी ही लिया जाता है, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं लिया जाता है. If we take secondary or tertiary alkyl halide at that time, yes, elimination reaction you can observe and finally it will give alkene compound. लेकिन हम लोग का पर्पस तो ईथर बनाने का है. तो ये विलियमसन सिंथेसिस में हमें प्राइमरी अल्किल हैलाइड ही लेना है. ओके, तो ये बात हो गई अपनी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ईथर की. सिल्वर ऑक्साइड के साथ कंटिन्यूस एस्थरिफिकेशन, और थर्ड वन विलियम सिंथेसिस. ये विलियम सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, समझ लो. ये कहीं ना कहीं कन्वर्जन में बीच में भी आएगा. ये कंटिन्यूस इथरिफिकेशन में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है. तो यहां खत्म करते हैं स्वरा. ओके, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर लेके. ओके, थैंक यू वेरी मच.